I am now quoting one gentleman. One of the biggest mistakes we ever did was getting involved in other affairs, and we learnt it the hard way. We learnt it the hard way in 54, after which 62 happened, when we tried to interfere in the Korean War, and we learnt it the hard way when Rajiv Gandhi sent the troops for the peacekeeping. You know who said that, Nikhil? Natwar Singh, lifelong Congress person, external affairs minister, a lifelong diplomat. So that is what happens when you interfere in other people's matters. हमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला नहीं बनना, आपको बनना होगा अब्दुल्ला. ये देश अब्दुल्ला का नहीं है, ये आप समझो बात को. We are a nation that has to watch out for its own interests. Unlike Pakistan, where there was rationing of fuel, where 4 out of the 7 days, Pranesh, there was work from home because they could not afford it. That trophy chore, that Mohsin Naqvi, whoever that person is, he said, I was so busy with world peace that we could not manage PSL. You know, the lights went out in PSL. And these people, they say we are the mediators, and the entire ecosystem yesterday was going mad that Pakistan has become the leader of the global south. Now, this is what the leader of the global south looks like. They can't afford to have 2 square meals on the plate. And these Congresses, they continue being their mouthpiece. Whether it is the argument that Narendra surrendered or how many jets fell down, these people are the biggest cheerleaders of Pakistan. And then they argue, why are we called anti-national? For reasons like this, Nikhil. Faizan Kidwai, do you agree with Nikhil Jain when he says India should be mediating? See, good evening, Pranesh. First of all, I just want to bring to your notice that I'm sure everybody knows that how Narendra Modi and his ecosystem was talking about कि पापा ने वॉर रुकवा दी, so if India should not mediate, तो पापा ने वॉर क्यों रुकवा दी? मैं जवाब देता हूं सर, इसका जवाब मैं देता हूं. फैजान भाई, सवाल आपने पूछा, जवाब भी ले लीजिए, बिकॉज अभी हमारे समिट में कांग्रेस के बड़े नेता आए थे जो आजकल अनडिस्क्लोज लोकेशन पे हैं, पवन खेड़ा. उन्होंने भी स्टेज पे यही बोला था. तो उस समय की सीमा थी, तो वो सवाल जवाब रह गया. इसका जवाब ये, हमने वॉर इसीलिए रुकवाया था ताकि जो भारतीय वहां फंसे थे वो वापस लाया जा सके. हमारा इंटरेस्ट हो गया वहां खत्म. हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने लोगों को सिक्योर किया, इसीलिए रुकवाई थी. Sir, यहाँ पे, Pranesh, I mean, this is laughable what you're saying. This is unfortunate. I'm sure you know that there are around more than 90 lakh Indians living in the Gulf countries. Remittances more than 4 lakh crores comes to India from the Gulf countries. So this is in the interest of Indians. If there was a war, a situation like war that is happening in the Gulf countries, Narendra Modi has all the responsibility to make sure that Indians living abroad, they are either safe there or safely brought back to This India. is not about Indians. No, sir, in Ukraine, we brought back the Indian students. Yes, we Now, did, but majority people of India, it's not making sense, Faizan भाई. एक छोटी सी बात. देखिए, ये फैजान जी ना अखिलेश जी को ढंग से पढ़ते नहीं है. अखिलेश जी ने 3 साल पहले कहा था, क्या विश्व गुरु करने में लगे हुए हो, अपना देखो. 2022 की बात है ये, जस्ट इन द बिल्डअप ऑफ द यूपी इलेक्शंस. हमें विश्व गुरु वगैरह नहीं बनना. आज क्या कह रहे हैं फैजान जी? विश्व गुरु बनना चाहिए था. अपना रोटी देखो, अपना पानी देखो, अपना खर्चा देखो. आज फैजान जी कह रहे हैं कि नहीं, हमें विश्व गुरु बनना है. टुडे व्हेन अ कंट्री वॉचेस फॉर इट्स इंटरेस्ट, ही हैज अ प्रॉब्लम. प्लीज फैजान भाई, प्लीज गो अहेड. At least I request Karan, please kindly don't interject. आप अपने टाइम पे बोलिएगा, I'll listen to you and then I'll count to you. तो विश्व गुरु आपको नहीं बनना, चलिए अच्छी बात है, पहली बात बताया. वरना हर दिन तो ये था कि वी आर द लीडर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ. फाइनली करण जी, हु सपोर्ट्स भारतीय जनता पार्टी, सेज दैट वी हैव नो इंटेंशन टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ. सर, अभी लेट मी, सर प्लीज लेट मी कंप्लीट. ओके, चलिए, आपको मीडिएट नहीं करना है. इंडिया की एक हिस्ट्री है. वी हैव बीन नोन टू बी द चैंपियंस ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट. इट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू हु रिफ्यूज्ड टू बिकम अ पॉन इन द हैंड्स, refused to become a pawn in the hands of Soviet and the US during the Cold War. He refused to sign SEATO and CENTO pacts because for him, India's strategic autonomy was of great importance, unlike Mr. Narendra Modi, who compromised कि भाई ईरान से ऑयल नहीं लेंगे, हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे. So this is a spineless prime minister, a डरपोक prime minister who was asked by Trump to go to Israel and become a puppet in the hands of this criminal Netanyahu, who has an international warrant against him. This reduced the respect and reputation of India globally. चलिए, आपको बाहर को मीडिएट नहीं करना है, कम से कम हिंदुस्तान के अंदर तो हालात बेहतर कर देते. Just let me read this data for your benefit, sir. China has 1.4 billion barrels of oil reserves.
China produces 34% of its energy from solar, wind and hydro power. और China has a LNG reserve of 60 billion cubic meters. हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है. We hardly had oil reserves for 5 to 6 days. India mein the LPG production, the LPG consumption has gone up, but our strategic reserves are still the same, 12 million metric tons. I'll tell you, फैजान भाई, इसका एक छोटा सा आंसर देता हूं, then I'll get in the others. एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप भी निखिल जैन की तरह तेज बोलने लगे हैं, and you, by in doing that you compromise on, you know, logic, common sense. Usually I agree with most of what you say, but आप देखिए this China example, how is this even relevant, फैजान भाई? If even if you remotely ridicule Xi Jinping in China, you will not be seen the next day. अब आप बोलिए यहां वो क्यों नहीं है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, आप बोल रहे हैं यहां डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? सर ये तो बहुत ही छोटी वॉट अबाउटरी है ना, तो हम कहां जा रहे हैं इस आर्ग्यूमेंट को लेके? मैंने शुरू में कह दिया व्हाट वाज एट स्टेक, एनर्जी, सेफ्टी ऑफ आवर पीपल, एक्सेस, वो सब हम कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग टू ऑल साइड्स, वी आर टॉकिंग टू ईरान, वी आर टॉकिंग टू सऊदी, वी आर टॉकिंग टू अमेरिकन्स. Iran has been thanking India. Oh, what is the problem? Siddharth Sharma, should India be mediating and why?